Actually, so yesterday, like we have seen what exactly the tab is, kind of relationship between tab and the object. And then we have learned two different customizations, that how to customize the tab bar and then how to make a sidebar as a collapsible component. These were the two things that we have learned yesterday. So if I go to this account object, now I can see that this sidebar is now a collapsible component. Okay. If you click this, if you click this, it actually becomes collapse. And when you click this, it becomes expand. I have also told you to find out this recycle bin. Always remember the recycle bin is a component of sidebar. So if you made the sidebar to be a collapsible, then you won't find recycle bin in any of the object you are not so you will not going to find the recycle bin anywhere. So always remember that recycle bin is a component of sidebar. So apart from this, we have learned how to bring few tabs over the tab bar and how to remove the tab from the tab bar. That is what the customization of tab bar what we have seen. So yesterday, basically two customizations that we have learned how to customize the tab bar, how to make a sidebar as a collapsible component. Now let's go ahead and do some more things like how to customize the recent record section. Okay. If you remember in the yesterday's lecture, I have told you few things. Let me first open this account record, account object, and we have discussed that. See, we are on the accounts tab, and see if you see from here to here, this is what this is the tab bar. This is the tab bar. This is what it's a sidebar. That is what we have make it collapsible. This icon appears over here. This icon appears over here. So we now conclude that we have made it to be a sidebar is a collapsible component. Now up to this, I'm bifurcating this particular page into different sections. I'm telling you what is the name of this section. Someone mic is on, Abhishek and Naushad. Guys, please mute yourself. Whenever you join, initially your mics are on. So please take care of this. Once you join the session, just see whether my mic is on or if it is off. Please take care of all this thing. So I'm bifurcating. I'm telling you what are the different sections present over here, and you need to remember all this. Okay. So the topmost is the your tab bar. ये आपका tab bar है. Tab bar के side में here you can see the sidebar what we have made a collapsible to be we have made this to be a collapsible section. Now this one, someone mic is again on. This one, this one is your recent. This one is your enhanced list view. Now below enhanced list view, this section, this section is the recent record section. Today we are going to do some customizations related to the recent record section and the things related to the enhanced list view. Now, today we are going to see this customization. So first of all, let me erase all of this thing and then let's start with the concept. Yes. So how you are going to make this recent record section customizable? What does it mean? First of all, enter navigation and enter, I think वो सब तो लिखा हुआ है वहाँ पे, so don't worry about that. वो अगर आप देखना चाहें तो ना I can show you that also. So the things I have been written, वो सब तो लिखा हुआ है. So if I go with this. So now what is the navigation to make the recent record section? These things have been written over. So you can find it in the notes. You can find it in the notes. तो notes में सब मिल जाएगा. What I am going to do is मैं आपको सीधा practical पे लेके जाता हूँ. देखिए, presently I can see in the recent record section there are three columns name. I can see the account name, I can see the billing city, and I can see the phone number. Okay. Presently, on the recent record section, I can see that there are three columns. Account name is being displayed. In this first column, I can assume that account name is displayed. In the second column, billing city is displayed. And in the third column, phone number is displayed. Okay. Now, what our client has told us, whenever I open any record, first of all, it goes to the recent record section. That you must remember. Whenever you open any record, it goes to the recent record section. It goes to the recent record section. Let me try to show you that. From here, you can click so many options. Just go with the all accounts and press the go button. Okay. Whatever the account record you are going to see. Let me try to open this age communication record.
So I have just seen this age communication record, age communication. I have just seen. I could make some sort of editing over here. और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा. I just scroll it down. I see, okay, this is the age communication record. And simply I go back to the account. Now see, on the recent record section, there's a name of age communication. Okay. If I once again go and if I open if I open United Oil and the Gas Corp, so if I see this record, I can make some editing over here, I can change the rating from, hot to maybe warm. And let me try to save this. Whatever. I could make some sort of editing over here. या मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. I'm doing nothing. मैं बस देख रहा हूँ. नौशाद, please mute yourself. ठीक है. So, मैं बस देख रहा हूँ. I'm doing, मैं बस देख रहा हूँ. So whatever the record you open, whatever the record you open, when you come back to the home page of the account, you come back to this home page. See, Umaira, guys, what is happening with you? I mean, frequently the mics are, the mics frequently on हो रहे हैं. थोड़ा ध्यान दो इस चीज पे प्लीज सभी लोग. थोड़ा डिस्टर्ब होता है. ठीक है. So whatever the account, see, whatever the account you open, whatever the record you open, not account, not just related to account. ये जो recent record section है ना, that is present everywhere. If I go to this campaign, see, if I go to the campaign, again I can see the recent record section over here also. But presently we have not seen any account, any campaign record. That is why the list is blank. If I try to open any, if I try to open any record, if I just open any of the maybe I open this DM campaign, if I just see to this record. So when I come back to the campaigns homepage by clicking on this tab, now I can see there's a name called as DM campaign to the top customers. So whatever the record you see, whatever the record you see, or you recently have done something over that record, it is going to be appear on the recent record section. For the lead object, I can see, again, there's a recent record section over here. Presently, we don't have any lead record because so far we have not, अभी तक यहाँ पे गए नहीं, but we have so far not, open any lead. Let me try to press this go button, try to get the list of all leads from here. Let me try to get the list of all lead records from here. And then what I'm going to do is that कि मैं उनमें से कोई एक record open करके देखता हूँ. For example, I have this, I have this let me try to open this record. A Mike Brown. So, Mr. Mike Brown, I'm just seeing this record and let me once again come back to the lead homepage. Now I can see in the recent record section, this record is appeared. So recent record section का मतलब क्या होता है कि whatever the records you have recently viewed or maybe you have edited, or you have updated the record or you have just viewed the record. So that record name is going to appear on the recent record section. Now this section is up. This section is present on every particular tab. On the campaign, it's recent campaign. On the lead, it's recent lead. On the accounts tab, you can see its name is recent account. If you go to the contact, if you go to the contact, let's go to the contact also. So there the name is recent contacts. We have not so far seen any contact, and that is why the list is blank. So everywhere you see on the home page of every tab, you have this recent record section. Let me come back to this account record. So everywhere on the every tab, on the homepage of every tab, you can see this recent record section. Now, what I want you to tell how to customize, how to bring few more columns over here. Now, see, एक दो बातें मुझे और डिस्कस करना है. पहले ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. देखिए कैसा है. For example, what our client is telling us, कि whenever I land on the home page of any particular, for example, if he's saying related to the account, so what the client is asking us, कि whenever I land on the home page, whenever I land on the home page of any account, for example, account record, let's say. So what he's saying that presently I can see only 3 columns over here: account name, billing city, and the phone. But what he's asking us that, can you bring some few more columns over here? Why? Because let's go to this, United Oil and Gas Corporation. Let me try to open this record. Let me try to open this record and see. What client is usually interested, client is interested in the rating and maybe, what the client want, he's interested in the rating and then the priority of the customer, the priority of the customer.
So what exactly he want is that कि वो चाहता है कि अगर होम पेज पे ही उसको ये रेटिंग्स वगैरह नजर आ जाए and the customer priority नजर आ जाए, so he can only concentrate on the high priority customer or maybe the customer who is having the hot rating. So he just want to in the first visit he just want to concentrate on those customer, those account record whose rating is what, whose rating is maybe the rating is hot, and maybe the active customer active hai, and just active customer the value of active is yes. He also want to see the annual revenue, है ना. So on the beginning itself, बाकी क्या हो रहा है कि ये details देखने के लिए उसको अंदर आना पड़ रहा है. He must come to the detail layout, है ना. He must come to the detail page. ये detail page, detail layout क्या होते हैं, ये सब चीजें करने वाले हैं. अभी मैं कुछ नाम लेना शुरू कर रहा हूँ और आप कैच करना शुरू करो, ठीक है. So now to get these all details, यानी कि कस्टमर का रेटिंग क्या है, कस्टमर का एनुअल रेवेन्यू कितना है, and then customer priority क्या है, whether the customer is active or not. Now, to get this value, he actually needs to jump into the detail page. So what he's asking us, can you bring a few more details over here? I mean, presently, whenever I come to the accounts homepage, what the client is asking, whenever I landed on the accounts homepage, presently I can see the billing city and the phone. But these are few entities that I don't want them to be present over here, because that's really that's really don't serve any purpose to me. Account name could be important to me. Seeing the account name is essentially important, but then I don't want to having this. If you are displaying me billing city and the phone, so that really it doesn't help me out for getting something. So instead of this, I want it, if it is possible to you, can you display the active status of the client? Maybe can you display the annual revenue? So can you, Rahul? Okay. So can you display this, the active status over here? Can you display the annual revenue? Can you display the rating of the customer over here instead of billing city and the phone? तो इस तरह का कुछ customization हमसे मांगा जा रहा है. So what we now are doing is that, we are learning how to bring few more columns over here in the recent record section. In the recent record section, how to bring few more columns or how to remove the columns from here. So for that, I have already given the entire navigation process. Expand the force.com quick access menu. Once you expand this, go to the click edit links. Then उसके बाद में जो भी interfaces हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हो. So when you practice for this, go with this navigation. The same I'm reflecting in here, in the practical. So we want to bring few more columns over here, and we want to remove this billing city and phone because the client doesn't want to see it over here. Client is asking, apart from billing city, he has told us to bring few more columns. That is what he want to see on the home page. So okay, fine, do it. चलिए कैसे करेंगे? You need to first expand the force.com quick access menu. सबसे पहले आपको force.com quick access menu को expand करना पड़ेगा. Then go with this link, edit columns. ठीक है, edit column. See, एक बात मैं बोलना चाहूंगा. Although I share everything with you, everything has been written. कुछ चीजें हैं जो कभी कभी इसमें नहीं मिलेगा नोट्स में. Otherwise, maximum I create it. I used to type it. But then what I want you is that कि आप ना अपना एक कॉपी वगैरह कुछ तो भी लेके बैठा करो यार. मतलब आप अपना लेके बैठा करो कुछ मे बी पेन पेंसिल ऐसा कुछ तो भी, ताकि आप अपने नोट्स क्रिएट कर पाओ. ठीक है. सो ये जो नेविगेशन मैं बता रहा हूँ वैसे तो लिखे हुए हैं, फिर भी बहुत अच्छा है अगर आप इससे अपने से कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सो हाउ टू कस्टमाइज द रीसेंट रिकॉर्ड सेक्शन, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपैंड द force.com क्विक एक्सेस मेन्यू. Go to this link called as edit columns. ठीक है, just click on this. Go to this link called as edit columns. Now, presently you can see account name, billing city, and the phone. Okay, we don't want this. तो एक तरीका तो ये है कि सिंगल एक एक को पकड़ के रिमूव करो. दूसरा होता है आप कंट्रोल का की प्रेस करके जितना चाहे उतना सिलेक्ट कर लो. So I have selected these two, billing city and the phone. Client don't want to make it visible on the home page. Just remove this. Now what he want to see? He want to see the active status. So active status को ले लिया मैंने. Apart from active status, he want to see industry name, but he want to see the annual revenue. He want to see the rating of the customer. Yes, these are the few details that the client is asking for us. So I have copied this annual revenue rating active. छूट गया क्या मेरे से? Billing, city, shipping, fax, account number, type.
टाइप, चलिए टाइप भी ऐड कर लो। एंड मे बी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, इफ यू वांट ठीक है ना, चलो कुछ और डिटेल्स ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखे वहाँ पे। Okay, this much details are fine. So I have added these columns. Let me just save this. So available field, selected field. So अभी आप देख सकते हैं along with the account name. Now we have added annual revenue. How much revenue is being generated from each client? Rating, the ratings, who's the hot rating customer, who's the warm rating, cold rating, whether the customer is active or not. Type of the customer, customer direct है, prospect है, क्या industry. If you don't want to have this type, again go with the same navigation. ठीक है, if client, client come back and say, hey, can you please remove this type? Yes, we can do that. Once again, expand the force.com quick access menu, go with this link called as edit column. Just click on this link, just click on Hello, this link. sir, Yeah. you're not. Okay, maybe it's all due to my internet. I'm going to repeat this point. Am I audible now? Okay, please share me host command once again. Thank you. Yes. So once again, we come back to this and I have removed, I need to remove this type from here. So select the type and just press this button, remove, make it save. So now you see we have removed that type column from here. So this is how we usually customize the recent record section. So this I have done according to the accounts, you need to do with the campaigns, go to the campaigns, just, go with this edit columns and see how many columns you want to edit over here. Do this practice same with the lead. Go to the lead, just expand the post.com quick access menu, click on this edit columns and select whatever the column you want from here to here. Go do this with the contacts and the opportunities also. तो इस तरह से दो तीन जगह जाके आपने प्रैक्टिस करना है इस चीज को, ठीक है. आई एम गोइंग टू शो यू one example. You need to make it practice. You need to make 2 to 3 examples based on that. तो recent accounts, recent record section को इस तरह से customize किया जाता है. Now let's learn the second customization is the customization of enhanced list view. First of all, where is the enhanced list view? What is the enhanced list view section? This is your enhanced list view section. Okay. This is precisely your enhanced list view section. What is the importance of this section? Let me first tell you. उसके बाद हम customization को सीखेंगे. चलिए. So enhanced list view is a kind of pick list menu. Okay. It is having few options over here. Either you can select all account. Okay. You can select my account. Now, what is the difference between all account and my account? Let me try to tell you this also. See, when you select the all account, and if you press this go button, when you select this all accounts and you press this go button, so as many records are there inside the account object, they are going to be listed out. They are going to be listed out. So presently, I can see that we are now having this 13 records. We are having 13 records inside this. We are presently having 13 records. So all of them are going to be listed out over. This is what all accounts. Now see, अभी यहाँ पर एक बात जो डिस्कशन करना है वो ये कि before I actually go and tell you how to customize the enhanced list view and what is the difference between all account and my accounts, what is the difference between all contacts and my contacts, all contacts, my contacts, what is the difference between this. तो ये मैं समझाने से पहले एक चीज आपको पूछना चाहूंगा. See, when I press this all accounts, I can see there are 13 accounts recorded inside my organization. If I go to this contact, if I go to the contact and if I press this all contact, so I can see that there are 20 contact records that are present inside my organization. I have not created them. Neither I have created the account record. If I go to the opportunity and if I press this all opportunity, all opportunity, then there's my opportunities also. So I'm going to tell you what is the difference between all and my. But first of all, let me complete with this point. All opportunity. If I press this, now I can see there are total 31. One out of 25 or 31 is going to be displayed. If I press this next button, so now I can see the remaining opportunity records. So I can make some adjustment over here. I can make them visible on the same page. So 1 out of 31 out of 31.
So all 31 opportunity records are being listed out here when I press this all opportunity button. But again, these are the opportunity records which are not created by us. See, recently we have created this org. अभी तो हमने just org create किया है. But I can see there are few data inside the contact opportunity everywhere. If you go to the campaign again, you are going to find some data over here. You are going to find some all active campaigns or maybe my active campaigns. You can see there are 3 to 4 records in the campaign also. If you go to the lead, again, you are going to see few records in the lead object also. See, 1 out of 15 of the 50. Now, question is that, see, we have not created all these records. How come these records are present inside my organization? How come these records are present inside my organization? Let me tell you one thing. Let me show you one thing. Let's go to the setup menu. Inside the administrator menu, go with the company profile, and then click on the company information. हमने कल या परसों इसके ऊपर डिस्कशन किया है. I think कल ही किया है. Once we created our org, तो शायद कल ही हमने इसके ऊपर में डिस्कशन किया था कि go with this navigation, go to this particular interface, and you can see the entire details related to your organization. What is your organization name? What is your username? What is your organization edition? On which particular server your organization is being present? What is your organization ID? You can see the 15-digit ID over here. What is the data spaces and the file space being allotted to you, and how much space you have consumed? You have consumed approximately 298 KB. अभी तो हमने कोई रिकॉर्ड स्टोर ही नहीं किया है, बट हमने कैसे इतना कंज्यूम कर लिया? लेट मी ट्राई टू सी दिस. We have, as a data storage, we have allotted 5 MB, and presently we have used 298 KB out of that 6%. That's 6% of your entire capacity. But so far we have not stored anything inside this data, है ना? फिर कैसे ये हो गया? Because inside the opportunity there are 31 records present. Inside the cases there are 26 records there are. Inside the lead there are 22 records. Inside the contact, see, inside the campaign there are 4 records. Just now we have seen. Inside the account there are 13 records. All of the objects that is having few records, these objects have been listed out here. And then what is the data? What is the capacity they are holding? For storing this 31, 62 KB is required. For storing this 26, 52 KB. And that is how 298 whatever the KB has been consumed. Now, how come these records are present inside these objects? How come opportunity is having 31 records? We have not stored anything. We have not stored anything inside this. Then how come cases is having all this? So this all data, whatever is present inside these objects, this is something called as standard data. Standard data. Your objects, whether it's opportunity, the cases, and the leads, contacts, campaigns, accounts, solution, all of them. All of these objects are having few records inside it. Although we have not created, we are going to create. So don't worry, we are going to create our own data in the account, in the every object also. But then presently, I can see that there are 31 records inside the opportunities, and there are 13 records inside the accounts. What are these data? These are what? These are the testing data. These are the sample data. These are the standard data. Why Salesforce has given you this standard data? Salesforce even can give you the object and make it blank. But see, what is the purpose of creating this developer edition? Why we create this developer edition? The only purpose of giving you this free account, a lifetime free account from the Salesforce, the only purpose is to get yourself trained on the Salesforce. This one is for the training purpose. And that is why, Salesforce has given you this account. Salesforce has given you all these features. Salesforce has given you all these objects. And then Salesforce even give you few sample records inside this so that you can understand. If I go to the account, if I open this record, I can see, if I go to and edit this, I can see how the data is being entered inside all these fields. This is the only purpose, we have sample data inside the records. So this is why if you go to any tab, you usually see some of the sample records that are already present inside this. So can you create your own data? Yes, we can create your own data. Click on the new, write down any name. For example, Merck Corporation. Okay. What is the type of customer? It's a customer direct or maybe the prospect customer. What's the industry? Industry is the insurance industry. What is the annual revenue? This is the annual revenue. The rating is hot. This is the phone number. And this is the fax number. This is Merck Corporation is the website. Ownership is public. I'm going to create my own data. Customer priority is high.
whether the customer is active. Yes, the customer is active. Okay. Customer is active customer. Kind of SLA is holding. He's holding a gold because he's a he's a high priority customer. And now I'm saving this record. So see, now I have created my own customized record. This is the very first record, very first custom record. That is what I have created. Now if I go to account, and now if I press the account, अब मुझे 13 के बजाय 14 मिलेगा. See, 14. Now the count has increased by 1. Salesforce has given you few sample data in almost every object. Why? By looking into that, you can you can learn, because see, the only purpose of creating this developer account is for learning. It's for the training purpose, and that is why Salesforce has given you few sample records almost in every object, so that you can learn. क्या अच्छा ऐसा data store होता, okay, इस field में मुझे ये store करना है. This is what the observation. This is the only purpose of giving you all this sample record. Otherwise ये blank भी रह सकते थे, है ना, but ऐसा नहीं रहता है. So these are the few good reasons कि you can understand कि ये ऑब्जेक्ट्स में ये डेटा क्यों है, पहले से ये डेटा क्यों है. चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. We are going to this recent record section, enhanced list view. Sorry. Now inside the enhanced list view, you can see there are so many options. If I go to all accounts, I can see all accounts. If I press on my account, again I can see all of the accounts. Again I can see all the accounts. See, what is the difference between my account and all accounts? So my account और all account के बीच में जो difference आता है वो user से related. अभी exactly user क्या है ये थोड़ा सा आपको अभी तो नहीं समझेगा, but let me try to show you. Okay, inside your organization, apart from you, there are few more users. Go with this navigation, manage users, and then press users. So now you can see there are 4 users inside this. आपके ऑर्गेनाइजेशन में चार यूजर्स हैं, चारों डिफॉल्ट. एक आप है प्लस 3 और है. You are this user, training my salesforce 105@gmail.com, and you are the default system administrator. Whenever we create any account with any email ID with any user name, this is the username what we have selected that time when we were filling the form. With this username and with this email ID, with this email ID and with this username, we have created this organization. Likewise, you also have created one organization. All of you have created one organization, selecting one username and giving one email ID. So by the way, when you create any organization, you becomes a user. Let me try to show you that diagram. Let me try to show you one diagram regarding this. Maybe this is the diagram. So whenever we create any account, whenever we create any account, you have created a developer account. That means one user has been created. Where? Inside the organization. Where the organization is created. The organization is created inside a server. Whenever we create account, it could be a developer account, it could be an unlimited account, whatever the kind of edition you are using, depends on that. So for using the Salesforce instance, one account is created. जैसे हमने अभी create किया, एक developer account हमने create किया. Whenever a developer account is created, one user is created. एक user create होता है by default. कहाँ user create होता है? Inside one organization. Now where the organization is created, जब user create हुआ तो organization create हुई. Organization कहाँ create होती है? एक server में. Now that server could be NA, EMEA, AP. जैसे आपका जो instance create हुआ है, वो AP24 पे create हुआ है. So with this, we have created one account, one user is created, one organization is created inside one server. This is all. This is all what we were discussing. So let me come back to the topic. So with this email ID and with this username, I have created one account. So one user is created. What kind of user? System administrator user. But apart from this, there are few more users that are sitting inside my organization, and these are called as standard users. अब ये आदत डालो आप, ये जो मैं जो टर्मिनोलॉजीज ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड कस्टम, ठीक है. बहुत जगह ये बातें होने वाली, तो आप थोड़ी सी इस चीज की आदत डालो. क्या? Whenever you see something that is being offered to you from the Salesforce, जब भी आप कुछ ऐसा देखें जो कि आपको Salesforce की तरफ से ऑफर किया गया है, something that is being given to you from the Salesforce, you have not created, आपने नहीं बनाया, तो उसको आप टर्म देंगे स्टैंडर्ड. अभी जैसे मैंने देखा यहाँ पे यूजर्स हैं, ये तो मैं हूं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर चैटर यूजर, देयर आर इंटीग्रेशन यूजर, देयर आर सिक्योरिटी यूजर. आई कैन सी 3 more users. I have not created them.
तो व्हाट टू टर्म देम, उनको क्या नाम से बुलाया जाए? दे आर द स्टैंडर्ड यूजर्स, दे आर द स्टैंडर्ड यूजर्स। यू हैव सीन कि हमने कैंपेन लीड ये सब ऑब्जेक्ट में गया, मैं आई हैव सीन फ्यू रिकॉर्ड्स देयर वेयर देयर इनसाइड देयर ऑब्जेक्ट्स, आई हैव नॉट क्रिएटेड देम, तो अब उनको क्या नाम दूं? स्टैंडर्ड नाम। So whenever you see something that is being not created by you, although it's created by the Salesforce for you, try to name them as the standard, as the standard. तो ये वर्ड बहुत कॉमन चलेगा, बहुत दूर तक चलेगा, और इसकी आदत डाल लीजिए। जो आपने बनाया उसे कस्टम बोलिए। जैसे अभी मैंने एक अकाउंट रिकॉर्ड बनाया, तो मैंने नाम दिया इट्स अ कस्टम रिकॉर्ड। क्यों नाम दिया? बिकॉज दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय मी, मैं उसका ओनर। बट द थिंग्स व्हाट इज नॉट क्रिएटेड बाय मी, जिसको मैंने नहीं बनाया, सेल्सफोर्स ने प्रपोज किया मुझको, तो ऑल दैट फंक्शनैलिटीज, ऑल दैट रिकॉर्ड, सब कुछ जो भी है, सब स्टैंडर्ड है। सो नाउ आई कैन सी दिस थ्री यूजर्स, ये भी कुछ यूजर्स हैं जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए हैं, एंड दे कैन इवन शेयर द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमसे ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर सकते हैं, चार्टर तो नहीं, बट एटलीस्ट इंटीग्रेशन एंड सिक्योरिटी यूजर कैन एक्सेस दिस अकाउंट लीड ऑब्जेक्ट, दे कैन आल्सो क्रिएट सम डेटा इनसाइड द अकाउंट, जैसा कि मैंने अभी किया। रिसेंटली आई हैव क्रिएटेड वन अकाउंट रिकॉर्ड, वर्क इन कॉर्पोरेशन, आई हैव क्रिएटेड दिस रिकॉर्ड, So if you select this all account or my account, so the major difference between all and my is that if you see all, if you select all account, so all of the accounts are going to be visible, ठीक है? And if you select my, तो आपको सिर्फ आपके जो यूजर है वो दिखाई देंगे, लेकिन इसको प्रोफाइल लेवल पे सेट करना पड़ता है, थोड़ा सा सेटिंग्स करनी पड़ती है इसकी प्रोफाइल लेवल पे। अभी तो फिलहाल जो है सारे ही दिखने हैं आपको, अभी ऑल और माई सेम रहेगा, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि माई में करने के बाद में एज एन यूजर व्हाट यू हैव क्रिएटेड, अगर इंटीग्रेशन के यूजर ने कुछ बनाया है तो उसको वही अकाउंट दिखेंगे, ठीक है, और अगर सिक्योरिटी यूजर ने कुछ क्रिएट किया तो उसको वही दिखेंगे। बट इफ यू क्लिक ऑल अकाउंट्स तो फिर आपको सारे अकाउंट नजर आएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसको किसने किसने क्रिएट किया है। सेल्सफोर्स ने क्रिएट किया है वो भी नजर आएंगे, जो हमने क्रिएट किया है वो भी नजर आएंगे, और मे बी इंटीग्रेशन यूजर ने या सिक्योरिटी यूजर ने अगर कोई अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट किया तो वो भी नजर आएंगे। नाउ दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड माई। अब ये हर जगह है, ये कैंपेन में भी है, लीड में भी है, कॉन्टैक्ट में भी है, अपॉर्चुनिटी पर भी है ना, तो कंसेप्ट वही है हर जगह। आपने क्रिएट किया या दूसरे ने क्रिएट किया, सारे देखने ऑल पे जाओ, आपने जो क्रिएट किया केवल वो देखने माई पे, वो अकाउंट जो न्यूली लास्ट वीक में क्रिएट हुए हैं वहां पे जाओ, न्यू टू दिस वीक जो अभी अभी क्रिएट हुए हैं, ऐसे अकाउंट्स देखने जिसका SLA लेवल प्लैटिनम और गोल्ड है, या फिर रिसेंटली व्यूड अकाउंट्स देखना चाहते हैं तो वो देखिए आप, जो भी रिसेंटली व्यूड है। तो वट एवर द ऑप्शन यू सिलेक्ट, दैट टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन, दैट टाइप ऑफ फिल्टर इज गोइंग टू बी अप्लाइड। इफ यू वांट टू सी ऑल दोज अकाउंट्स रिकॉर्ड हुज SLA लेवल इज प्लैटिनम और गोल्ड, तो फिर आप ये देखिए, आप प्लैटिनम और गोल्ड जो भी है, सो फिर वो आपको वो अकाउंट रिकॉर्ड नजर आएंगे। इफ यू वांट टू सी द अकाउंट रिकॉर्ड दैट आर न्यू टू दिस वीक, आई मीन दोज हु आर क्रिएटेड इन दिस वीक ओनली, तो आपको ये, तो ये है एनहांस लिस्ट व्यू, एनहांस लिस्ट व्यू क्या, इट्स अ पिक लिस्ट में। ड्रॉप डाउन मत बोलना है इसको, क्योंकि ड्रॉप डाउन जो होता है ये डॉटनेट का वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है। इन द सेल्सफोर्स वी यूजुअली कॉल दिस टू बी द पिक लिस्ट में। आउट ऑफ दिस यू नीड टू पिक समथिंग। पिक लिस्ट में दो होती है, मल्टीपल और सिंगुलर, तो ये सिंगल पिक लिस्ट है कि आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस यू कैन ओनली सिलेक्ट वन ऑप्शन, दैट इज अ सिंगल सिलेक्शन पिक लिस्ट। अभी मल्टीपल सिलेक्शन पिक लिस्ट भी होती है, आगे चल के पढ़ने वाले हैं आप उस चीज को, बट फॉर नाउ व्हाट यू आर सीइंग, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज पिक लिस्ट मेनू, पिक लिस्ट मेनू, ठीक है। तो अब इसमें इतने ऑप्शंस हैं। इफ आई गो टू द कॉन्टैक्ट्स, again there are few options over here, all contacts, whether contact those who's having birthdays in this month, bulk SMS contacts, my contacts, new to the last week, recently viewed. If I go to opportunity, again I can see in the enhanced list view there are few options over here. If I go to the campaigns, I can again see there are few options over here. If I go to the leads, again I can see there are few options in the enhanced list view. So everywhere, first of all, everywhere the enhanced list view section is present, and it is having some options. Now the question, can we change few options over here? Can we remove few options? Can we insert few more options? Because this option seems too rigid to me. I mean, everywhere these are standard. These options are standard options. We have not created this, but these were present inside the list menu. Now, can we customize few things related to our own business requirement? मतलब client आया, client ने mail किया, क्या mail किया? ये mail किया. Now let's come to the topic. Whatever the client has requested, we call this to be the use cases. What is a use case? Use case is a sort of requirement, but small requirement. ठीक है, छोटी छोटी requirement, छोटी छोटी बातें, we call this to be the use cases.
So what is the use case? Use case, client is asking to configure a list view. Client is want few more options in the account. I mean, he is not satisfied with all these options. The client is telling us, yaar, this actually doesn't help me out. These are few standard options you have given to me, but that doesn't suit to my requirement. What is asking? What is asking? Can you show me? I mean, can you insert an option that hot rating customers? I mean, if something like I must have. Hmm. So when client is asking, can you have one option that I can see just by clicking to that, I can see all the customers whose rating is hot because I want to concentrate only on that customer first. Presently, I cannot see any option over here. So we need to insert one more option called as hot rating customer. And when someone click that option, he should, all the hot rating customer, all the customers whose rating is hot should be listed out, should be listed out. That is what the requirement. So now this thing is called as customization of enhanced list. Naushad, okay. So this thing is called as customization of enhanced list view. So I'm telling you this related to account. I'm telling you this related to account, and I'm giving you few assignments related to other objects. Like in the case, you need to do some sort of customization in the lead opportunity, in the account, and even the contract. तो ये कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको देने वाला हूँ. एक मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी related to the accounts. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को. So we need to insert one more option in the enhanced list view. We need to insert one more option called as hot rating customers. Hot rating customers. Okay. तो इसे कैसे करेंगे इसको? हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? द एंटायर नेविगेशन हैज बीन रिटन ओवर हियर. द स्टेप बाय स्टेप व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू एंड एंटायर थिंग हैज बीन रिटन. ठीक है, वही सेम मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ. आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट. मैं इसको पढ़ूंगा फिर वो करूंगा, इतना समय नहीं है हमारे पास. थिंग्स हैज बीन रिटन, सेम आई एम गोइंग टू डू इन द प्रैक्टिकल. ठीक है, चलिए. गो विद दिस एडिट, गो विद दिस एडिट और क्रिएट अ न्यू व्यू. दोनों पे जा सकते, दोनों में से किसी पे भी जा सकते. ठीक है, आप चाहें तो एडिट पे जाइए, आप चाहें तो क्रिएट अ न्यू व्यू पे जाइए. दोनों में से किसी पर भी गए चलता है. एडिट में प्रिसाइसली आप किसी एक ऑप्शन को एडिट कर सकते हैं, बट प्रेजेंटली आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू गो विद दिस ऑप्शन कॉल्ड एज क्रिएट अ न्यू व्यू. लेट्स प्रेस दिस बटन. व्हाट इज द व्यू नेम? आई हैव ऑलरेडी कॉपीड दिस. हॉट रेटिंग कस्टमर्स. ठीक है, विद दिस नेम वन मोर ऑप्शन इज गोइंग टू बी इंसर्टेड. यूनिक नेम आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता है. एज सुन एज यू प्रेस द टैब फ्रॉम हियर टू द यूनिक नेम इज ऑलरेडी क्रिएटेड. अब ये यूनिक नेम क्या होता है? वी कॉल दिस टू बी द एपीआई नेम. एपीआई नेम, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. सिर्फ सुनते चलो, सिर्फ सुनते चलो. हर चीज का अपना एक वक्त होता है. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट डज एक्चुअली एपीआई नेम्स मतलब क्या होता है, फील्ड लेबल्स क्या होते हैं, फील्ड नेम क्या होता है, एपीआई नेम क्या होता है. ठीक है, तो ये सब चीजें मैं बताते चलूंगा. अभी बस मैं जिस जिसका नाम लेते जा रहा हूँ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, ताकि आपके कानों पे वो शब्द पड़े और आपको वो चीजें याद होता जाए. अभी रिसेंटली मैंने एक नाम लिया डिटेल पेज. ठीक है, डिटेल पेज, डिटेल लेआउट, एडिट लेआउट, ये सब मैं चीजें बस नाम लेता चला जा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाए. फिर जब उसका वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ सी, ये हम इतने दिनों से हम जो बात कर रहे थे ना, वो ये चीज है, ऐसा. ठीक है, चलिए. So with this name, hot rating customers, we are going to create one more option in the enhanced list view. Now what you want to do, जब भी आप ये यहाँ पर कोई hot rating customer पे सिलेक्ट करें, तो अब जो भी मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, that should be related to all accounts. वो सब पे लगना चाहिए कि only for the account that has been created by me. Presently, I want that filter to be applied on all accounts. That option should be applied on the all account. And so I have selected, by default selected है यहाँ पे. अब आइए फॉर्मूला पे. तो फॉर्मूला क्या आपको लिखना पड़ता है? ऐसा कुछ लिखना पड़ता है? कुछ नहीं. ये आप एडमिन मॉड्यूल पढ़ रहे हो. एडमिन मॉड्यूल में आपको कहीं पर भी कोडिंग तो करनी नहीं है, और मैक्सिमम एफर्ट्स भी जितने हैं, फॉर्मूला फील्ड्स, वैलिडेशन रूल, सब जगह ना ऑटोमेशन है. यू जस्ट नीड टू क्लिक, यू जस्ट नीड टू मेक द माउस क्लिक्स. तो मेरे ख्याल से शायद ही कहीं पर कुछ लिखना पड़े, और लिखना पड़ेगा भी तो बहुत थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, राइटिंग एफर्ट्स बहुत कम है. सिलेक्ट द फील्ड व्हाट यू वांट. I want to have the rating value. ठीक है, that the rating, yes, go with this. The rating equals to not equals to, less than, greater than, less than, greater than for numericals, less than or equals to, greater than or equals to, again for the numerical value. Contains, does not contain for the textual data. Start with, again for the textual data. ये स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट के लिए यूज होता है. ये चार ऑप्शन नंबर्स के लिए यूज होते हैं. ठीक है, और ये फील्ड्स के लिए. इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू फॉर द फील्ड्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, ये आप भी समझ सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल कंपैरिजन को इस्तेमाल होते हैं. और ये स्ट्रिंग कंपैरिजन जिसको आप टेक्स्ट बोलते हो,
जैसे कि सिटी इक्वल्स टू बैंगलोर और नॉट, सिटी इक्वल्स टू बैंगलोर, सिटी कंटेन्स बैंगलोर, डज नॉट कंटेन बैंगलोर, ठीक है। स्टार्ट विथ बी, स्टार्ट विथ सी, ऐसा कुछ। तो ये तीन ऑप्शन आपके स्ट्रिंग कंपैरिजन के हैं, ये न्यूमेरिकल कंपैरिजन के हैं, और ये फील्ड लेवल कंपैरिजन है। सो द रेटिंग शुड इक्वल्स टू व्हाट, क्या मुझे हॉट टाइप करने की जरूरत? प्लीज शेयर द होस्ट कमेंट। Did I need to type anything over here like rating equals to hot? There is no need to type. There is no need to. See, there's a lookup icon over here. Just click on this. If you know the options, rating equals to क्या? If you know the options, you can type. You can also type. ऐसा कुछ नहीं कि type नहीं कर सकते. But I'm just telling you कि कोई जरूरत नहीं गलतियां करने की. If you know the options, go with this. You can type the value called to be hot. But if you don't know, just click on this because ये जो है ये pick list menu है. तो inside this pick list, rating is a pick list और उसमें तीन values है, hot, warm and cold. Just make a selection. We want this to be hot और etc. ठीक है? तो हॉट रेटिंग कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद वो सारे अकाउंट रिकॉर्ड, सारे मतलब ऑल, वो सारे हॉट रेटिंग कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद ध्यान से सुनिए, after making this selection, after clicking this label called as hot rating customer, all those account records are going to be displayed whose rating is what hot, whose rating is what hot. Then what kind of columns you want to display, that is again selected by, आप column select करो. So I don't want to I don't want to make it visible to the account side. I don't want to have this on the display. Billing settings जरूरत नहीं, phone की जरूरत नहीं, type की जरूरत नहीं, type phone, ठीक है. I don't want all of them. I'm just removing them. Instead of this, what I want is that apart from the account names, importantly, I should display the rating because rating display होगा तभी तो पता चलेगा कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. First of all, I should display the ratings. That is essentially important. अकाउंट का रेटिंग हॉट ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए तभी तो पता चलेगा. अगर रेटिंग का कॉलम ही हटा दिया आपने, आप खुद सोचिए, आप रेटिंग हॉट रेटिंग कस्टमर डिस्प्ले कर रहे हो और रेटिंग की वैल्यू ही डिस्प्ले नहीं कर रहे हो, सो ये ऑब्वियसली जस्टिफाई नहीं लगता है ना. यू कैन डिस्प्ले द एनुअल रेवेन्यू, कैन डिस्प्ले, you can display annual revenue, you can display industry, you can display active status, और बस ठीक है इतना. आई थिंक if you want you can display the phone also. चलिए. So I want all this column to be displayed. When the people make this selection, I want all these columns to be displayed. Visible to me? No, I want to visible it to all users. ठीक है, मैं selfish नहीं हूँ. I want to make it visible to all users. यहाँ selfishness की बात नहीं आ रही, यहाँ users के ऊपर restriction की बात आती है. ये सब चीजें आप सीखने वाले हैं कि आप किसको दिखाना चाहते हैं, only to you, only to the users or to the group. अब ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम सब डिस्कस करने वाले हैं. फिलहाल go with the selection. I want to make it available to all users, including the partners and the customer portals also. So make this selection and just save this. Now, whenever someone click this, see, अगर if I'm into this, although वैसे तो display हो चुका है, but मैं selection बताता हूँ. If I'm onto all accounts, if I am into this all accounts, and if I select this, पहली बात तो एक option insert हो गया. सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक one more option has been inserted जो client ने पूछा था insert करने के. So we have inserted one option over here. When we click this hot rating customer, now I can see all those account records whose rating is hot. So out of that 14 record, we presently have these two record whose rating is hot, whose rating is hot. If I go and, if I try to edit few, let me try to go with this Genie point, let me try to see. The rating is cold. Let me try to make some editing over here. Let me try to make this as hot and let me try to save this. ठीक है. So अभी मैंने एक को और hot किया है. So let's me once again go back to this account and let's make this selection as the hot rating customer. तो अब यहाँ पे तीन आ गए, Genie point भी आ गया. So we can now see कि our whatever the formula we have created is working fine. And these are the columns what we have decided to be displayed. अब आप हॉट रेटिंग कर रहे हो तो इसलिए हॉट रेटिंग दिखना चाहिए. ये कोई बोलेगा नहीं आपको, ठीक है. इफ यू आर डिस्प्लेइंग द हॉट रेटिंग कस्टमर तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कॉलम तो होना ही चाहिए, ठीक है. अब अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर कोई ऑप्शन अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री बना रहे हैं कि उस इंडस्ट्री इज बैंकिंग, इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग, तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन दे रहे हैं तो इंडस्ट्री को रिफ्लेक्ट करने के लिए कॉलम होना ही चाहिए. तो ये कोई बोलेगा नहीं आपको. दैट इज समथिंग यू नीड टू जस्टिफाई दिस, यू नीड टू जस्टिफाई दिस, ठीक है. तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें, कौन सा कॉलम डिस्प्ले करना है अपने को, कौन सा कॉलम डिस्प्ले करना है, तो वो उसमें जिसकी जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो पर्टिकुलर ऑप्शन तो यहाँ नजर आना ही चाहिए.
Apart from that, you can display anything, whatever you are interested to display. ठीक है. So this was related to the customization of enhanced list view. अब I have given you few examples related to this. आपको कुछ examples मैंने दे रखे हैं इसके ऊपर में जो आपको solve करने हैं. उसके बाद मैं एक दूसरा टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट आईडी एंड व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी. एंड फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू फिनिश टुडेज लेक्चर. टुमारो विल बी ओके सैटरडे, कल तो नहीं रहेगा, बट फ्रॉम द मंडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू क्रिएट वन एप्लीकेशन. So Monday is most important day for all of you. Please don't try to be absent. Try to attend this lecture because you are going to learn how to create one Salesforce application without writing a single line of code. जो ये मैंने प्रॉमिस किया था कि इनसाइड द एडमिन इज प्योरली एंड प्योरली अ नॉन कोडिंग एनवायरनमेंट एंड इवन यू कैन डेवलप एनी एप्लीकेशन. Even you can develop any application without writing a single line of code. So this Monday, अभी आने वाले Monday के दिन, you are going to create one application, one Salesforce based CRM application without writing a code. So how we are going to create this? That is what we are going to learn on the Monday. So Monday is essentially an important day. तो कोई भी absent नहीं रहेगा, please. ठीक है? Now let me finish with this. What exactly is the object ID and what is the advantage of knowing the object ID? ठीक है? चलिए, अभी तक भले ही आपने ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से जाना नहीं है, लेकिन काफी शुरुआत से इसके बारे में मैंने वन आई स्टार्टेड दिस टैब, है ना, टैब आपको बताना शुरू करा, तब से ही मैंने ये चीजें आपको क्लियर करना शुरू करा कि सी द ऑब्जेक्ट्स दे आर सिंगुलर इन द फॉर्म बट देयर टैब इज द प्लूरल इन द फॉर्म. So this is what we have understand. So if the object is campaign, tab will be the campaigns. S लगा देता है. लीड के लिए लीड्स होता है, अकाउंट के लिए अकाउंट्स होता है. तो ये थोड़ा हमने डिस्कशन किया. फिर आज हमने थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया. You must have now, I mean, थोड़ा बहुत तो समझ गया होगा कि कैंपेन इज एन ऑब्जेक्ट, लीड इज एन ऑब्जेक्ट. आई मीन दीज आर टैब्स, इसलिए वहां पे लीड्स ऐसा नजर आ रहा है. अकाउंट के लिए अकाउंट्स है, बट देन वी हैव डिस्कस कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. तो चलिए, ऐसा कहीं ना कहीं डिस्कस आपसे हो चुका है ऑब्जेक्ट के बारे में. ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है ये तो मैं और पढ़ाने वाला हूँ व्हेन वी क्रिएट दिस कस्टम ऑब्जेक्ट. तो 2-3 मरतबा इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाता है, और वैसे भी कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है. तो वी हैव सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, like account, contact, lead, campaign, solution, cases. We have so many objects. We have so many objects inside the Salesforce. We are going to create so many objects. These are something that is already present inside the Salesforce. We are going to create few more objects. तो इस पे भी चर्चा होगी आगे चल के. फिलहाल ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पहले से मौजूद हैं, एंड आई कॉल देम टू बी द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कशन में लिया कि वॉट एवर द थिंग्स, कुछ भी जो पहले से मौजूद है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बोलिए. अगर वो एप्लीकेशन है तो उसे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बोलिए. अगर वो रिकॉर्ड है तो उसे स्टैंडर्ड रिकॉर्ड बोलिए. ठीक है? अगर वो फंक्शनैलिटी है कुछ तो उसे स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी बोलिए. वट एवर दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड योर ऑर्ग, जो कुछ भी पहले से दिख रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, और जो फिर आप क्रिएट करोगे वो कस्टम है. ठीक है? वो कस्टम है. लेट मी शो यू दैट. मैंने कहा सेल्स स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है. दिस इज व्हाट एप्लीकेशन लॉन्चर. सर्विस स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है. मार्केटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है. तो प्रेजेंटली यू कैन सी सीआरएम के तीन बेसिक पिलर्स, सेल्स, सर्विस एंड मार्केटिंग. ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन मेरे पास पहले से मौजूद हैं. From Monday, we are going to create our own custom application. We are going to learn how to create our own custom application. Presently, we have sales, service, and marketing, and I call them to be the standard application. From Monday, you are going to learn how to create your own custom application. Okay? So everything, whatever it is present inside your org, standard. So far, it is standard. जब तक आप create ना करो. So these all are the standard objects. Account, contact, lead, campaign, and there are so many standard objects. If you want to ask me कि सर कितने हैं, बहुत सारे. बहुत पहले एक बार मैंने दिखाया था, आज फिर से दिखा देता हूँ. ऐसा नहीं कि इतने ही ऑब्जेक्ट हैं. यहाँ जाइए, and you can see there are so many objects. There are so many. These are the list. This is all the list of all objects and all functionalities. This is the list. ये बहुत सारे हैं. क्या इतने ही हैं? अगर आप इतने भी सेटिस्फाइड नहीं है तो ठीक है, चलो. आप अगर इसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो आई कैन शो यू सो फ्यू मोर थिंग्स. नहीं, इतना नहीं, इससे भी ज्यादा है. और है, बताइए कहाँ पर है. बिल्ड सेटअप, go to setup menu, go to the build menu, expand the customize. These all, path, codes, omni channel, console, call center, self, macros, idea, WC, INST. These all are what? These all are the objects. These all are the objects, standard objects.
ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, सो ऑल ऑफ देम आर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। फिर आप मुझसे पूछो सर इतने ही है, बस इतने ही, आप इतने में भी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है मैं आपको और दिखा सकता हूँ, डोंट वरी। गो टू विद दिस, आपके नेम पर क्लिक करिए, गो टू डेवलपर कंसोल। ये वैसे मैं सब सिखाने वाला हूँ, सो प्लीज डोंट राइट दिस नेविगेशन, आपको ये सब सीखने वाले हैं आप। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो ये आगे टॉपिक में आने वाला है, ठीक है। Go with this developer console. We call this to be the developer console. And inside the file menu, there is an option called as open. When you open this box appears to you. Okay. Inside this box, inside the entity type, you need to select the objects. Inside this entity type, you need to select the objects. You know, now here is the complete list. अब इससे ज्यादा नहीं. Here is the complete list of your objects. और फिलहाल क्योंकि आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, all of them are the standard object. अभी ये जो लिस्ट है, ये सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स की है। जब कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन अभी तो मैंने किया नहीं है ना, आपने भी नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई दिस लिस्ट इज एक्चुअली ऑल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। अब आप देख सकते हो कि आपके सीआरएम में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी से लेकर, बस कॉल इट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। देखो ये है योर एंटायर सीआरएम सूट, दीज मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इनसाइड योर सीआरएम। इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स, काफी बड़ी लिस्ट है, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सबका काम नहीं पड़ता हमको, वो डिपेंड करता है आप अपने प्रोजेक्ट पे किस पर है। तो देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, है ना, अब तो क्या कंफर्म होगा कि देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स। नाउ सी व्हाट द टॉपिक इज। डिस्कशन किस बारे में है? डिस्कशन इस बारे में है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैव इट्स ओन यूनिक आईडी। एवरी ऑब्जेक्ट हैव इट्स ओन यूनिक आईडी, 3 डिजिट आईडी, 3 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आईडी। Every object have its own unique ID. सबसे पहली बात, every object have its own unique ID. कितने डिजिट का आईडी? पॉइंट नंबर 2, 3 डिजिट आईडी। पॉइंट नंबर 2, 3 डिजिट आईडी। What sort of ID? It's alphanumeric ID. It could have alphabets like Q, like T, like U. It could even have numbers. So it's an alphanumeric ID. It's an alphanumeric ID. Okay. So if you go to the account, let me tell you the account object ID is 001. Contact is 003. There's nothing 002. If you ask me why, sir, why there's a gap between 1 and 3, I don't know. Because that is something which is being, provided to me, provided to you from the Salesforce. You need to make this question to the Salesforce, not with me. I can only tell you that the contact is having 003, lead is having 00Q, campaign is having 701, case is having 500, solution is 501, opportunity is 006, and then this order is, these all are the IDs. Document is 015. सो अब मैं यहाँ पे एक सलाह देता हूँ आप लोगों को, आपके प्रोजेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो ना, ट्राई टू लर्न देयर ऑब्जेक्ट आईडीज, ट्राई टू लर्न देयर ऑब्जेक्ट आईडीज। ज्यादा नहीं याद करनी है, ज्यादा नहीं याद करनी है, जितनी आपको रिक्वायर्ड है आपके प्रोजेक्ट में, जस्ट ट्राई टू लर्न। अच्छा कहाँ देखना उनको वो भी सीख लो, क्या ये हमको ऐसे याद करना पड़ेगा? नहीं, देयर इज नो नीड। इफ यू गो टू द अकाउंट, सी हियर 001/O, 001 is the object ID, /O मतलब होम पेज, O stands for home page, ठीक है। If you go to campaign 701, object ID 701, lead 00Q, contact 003, opportunities 006, cases 500, solutions 501, documents 015, है ना। This is where in the URL itself the object ID has been mentioned. तो मैं क्या सलाह देता हूँ कि आप जो भी जिस प्रोजेक्ट पे जाओ और जहाँ जितने आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लग रही हैं, ट्राई टू रिमेंबर द ऑब्जेक्ट आईडीज ऑफ दिस एज मेनी एज यू कैन, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। 2-3 जगह इसका काम बनता है। कैसे? एडवांटेजेस, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट आईडी वी कैन स्विच फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, बहुत अच्छे से स्विच कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कहीं यूआरएल पे हो, ठीक है, आप कहीं यूआरएल पे हो और मैंने यूआरएल पे कुछ चेंजेस किए, 001 एंटर, आई एम एंटर्ड इनटू द अकाउंट्स। तो एक तो ये फायदा होता है, ठीक है, एक तो ये फायदा होता है कि आपको अगर ऑब्जेक्ट का टैब है, ऑब्जेक्ट का टैब है और अगर नहीं है, टैब अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट मी ट्राई टू शो यू समथिंग, मतलब ये एग्जांपल में कैसे कोड करूँ आप, लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिमूव कर दिया मैंने, अब डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं है, आई एम इनटू द अकाउंट ऑब्जेक्ट, आई वांट टू डू समथिंग इन अ डॉक्यूमेंट,
एक, अगर मुझे डॉक्यूमेंट पे कुछ काम करना है, एक तो ये तरीका ये है कि आई गो टू दिस, है ना, देन क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट। एक तरीका तो ये है, फाइंड आउट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम हियर, जस्ट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जाओ और फिर काम करो। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगेन गो विद दिस, कस्टमाइज करो और डॉक्यूमेंट को ऐड कर लो, है ना, डॉक्यूमेंट को ऐड कर लो यहाँ पर, जैसा कि इसके पहले किया था, मैं डॉक्यूमेंट को ऐड कर लो, सेव करो। एक तरीका तो ये भी है आप, ठीक है। लेकिन इतना नेविगेशन, इतने लेंदी नेविगेशन से क्यों जाना? अगर आपको डॉक्यूमेंट पे कुछ काम है और आप अकाउंट पे हो, आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे कुछ काम है, तो इतने लंबे नेविगेशन से क्यों जाना? अगर आपको डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्ट आईडी पता है, तो जस्ट आप कुछ चेंजेस करें यूआरएल पे, यूआरएल पे कुछ चेंजेस करें, एंटर करें, यू विल गोइंग टू एंटर ऑन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ये वो फायदा है, ये मैं डिस्कस कर रहा था। दिस इज पॉइंट नंबर। पॉइंट नंबर टू इज रिलेटेड टू डीबगिंग। जब भी कोई एरर आता है किसी के रिकॉर्ड्स पे, तो वी कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड आईडी, बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड आईडी वी कैन फाइंड आउट कि ये कौन से ऑब्जेक्ट का है। लेट मी ट्राई टू शो यू दैट ऑल्सो। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट आईडीज पता है, लेट मी ट्राई टू शो यू दैट। लेट मी गो टू द डेवलपर कंसोल, ठीक है। लेट मी ट्राई टू बिंग एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ओपन ऑब्जेक्ट, लेट मी ट्राई टू सिलेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर, just make a double click on the account. Now you can see all the fields, see all the fields of the account, सारी fields यहाँ पे नजर आ रही। I want to have the ID, ID को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के नेम सिलेक्ट किया, फोन नंबर, फैक्स नंबर, इंडस्ट्री, एनुअल रेवेन्यू, मैंने कुछ फील्ड्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंट्रोल दबा के। और मैं क्वेरी, ये जो क्वेरी बटन दिख रहा है यहाँ पे, इस क्वेरी को बटन को दबाता हूँ, ठीक है। क्या होगा, चलिए बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। When I press this query button, a query SOQL, Salesforce Object Query Language, SOQL बोलते हैं इसको कुछ लोग, SOQL शॉर्ट फॉर्म है, Salesforce Object Query Language। एक क्वेरी जनरेट हो गई, ठीक है। सिलेक्ट कौन कौन सी फील्ड, जो भी मैंने सिलेक्ट करा, आईडी, पहली फील्ड आईडी, दूसरी फील्ड नेम, उसके बाद कौन कौन सी, फोन, फैक्स, इंडस्ट्री, एनुअल रेवेन्यू, कहाँ से, फ्रॉम अकाउंट, फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, दूसरा बटन एग्जीक्यूट करो। तो अब आप देखो एग्जीक्यूट करने के बाद में ये सब चीजें, मेरे को ये रिकॉर्ड मिल गया। इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, नीचे लेके आता हूँ। तो विद दिस मर्ज इनकॉर्पोरेशन जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है, दिस इज द रिकॉर्ड आईडी ऑफ मर्ज, ठीक है, दिस इज द रिकॉर्ड आईडी। ये रिकॉर्ड आईडी मैं कॉपी करता हूँ, डीबगिंग के लिए आपको आईडीज मिलेंगी, ठीक है। और मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ एंड लेट मी ट्राई टू पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। ये रिकॉर्ड आईडी, ये एक रिकॉर्ड आईडी, 18 डिजिट रिकॉर्ड आईडी, चीनी पॉइंट, कॉपी किया, कॉपी किया, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ रिकॉर्ड आईडीज हैं जो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू अकाउंट ऑब्जेक्ट। अभी ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए, लेकिन रिकॉर्ड आईडी को देखे कैसे पता चलता है, आइए देखते हैं। लेट मी ट्राई टू गो विद फ्यू मोर अकाउंट, लेट मी ट्राई टू गो विद द कॉन्टैक्ट। अब मैं कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फ्यू मोर इफ यू वांट टू मेक द क्वेरी, execute, okay, Gonzalez, this is the record ID of this particular contact. Let me try to copy this and paste it over here, let me try to paste it over, ठीक है। Let me try to have one more record, any random record, any random record. I'm just picking any random record and I'm just pasting it over here. I'm just pasting it over here. तो क्या होता है, डीबगिंग के टाइम पे ना आपको इस तरह से रिकॉर्ड आईडीज मिलती है, ठीक है, इस तरह से रिकॉर्ड आईडीज मिलती है। अब बाय लुकिंग इनटू दिस रिकॉर्ड आईडी, आपको पहले तो ये पता चल जाता है कि ये रिकॉर्ड आईडी कौन से ऑब्जेक्ट का है। कैसे पता चलता है, दिस इज द 18 डिजिट आईडी एंड दिस इज द वे टू गेट द 18 डिजिट। कल मैंने आपको बताया कि योर ऑर्गेनाइजेशन आईडी इज आल्सो 18 डिजिट, लेकिन आपको वहां 15 डिजिट नजर आता है। डेवलपर कंसोल पे सब कुछ नजर आता है पूरा। तो रिकॉर्ड आईडी अगर डेवलपर कंसोल पे देखोगे तो पूरा 18 डिजिट नजर आएगा, और एडमिन पे जाके देखोगे तो सिर्फ 15 डिजिट नजर आएगा। अब ये पूरा 18 डिजिट आईडी है इस रिकॉर्ड का। इसकी पहली 3 डिजिट देखिए आप, इसकी पहली 3 डिजिट अगर मैं ये हटाता हूँ, पहली 3 डिजिट है 001, 001, फॉलोड बाय द 15 डिजिट रिकॉर्ड आईडी, जो कुछ भी आखिरी की 3 डिजिट है वो चेकसम कहलाते हैं, आखिरी की 3 डिजिट चेकसम कहलाते हैं। ये हाइड होते हैं, ये 3 डिजिट हाइड हो जाती है एडमिन लेवल पे। डेवलपर को सब पता चलता है, ठीक है, डेवलपर को सब पता चलता है। चलिए छोड़िए। सो 001 मतलब अकाउंट रिकॉर्ड, 003, 003 पहले 3 डिजिट देखने से समझ में आ जाता है।
मतलब आपका कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, 00Q मतलब आपका लीड रिकॉर्ड, 701 मतलब कैंपेन रिकॉर्ड। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट आईडीज याद हैं तो बाय जस्ट लुकिंग इनटू द रिकॉर्ड आईडी यू कैन फाइंड आउट कि ये रिकॉर्ड बिलोंग्स टू विच ऑब्जेक्ट। और ये अभी भले आपको इसका इंपॉर्टेंस कम नजर आ रहा होगा, जब आगे चल के आप डीबगिंग पे पहुंचेंगे, है ना, जब आगे चल के आप डीबगिंग पे पहुंचते हैं, जब आपको रिकॉर्ड आईडीज नजर आती हैं, सिर्फ रिकॉर्ड आईडीज नजर आती हैं, उस वक्त आपको इसका मतलब जो इंपॉर्टेंस है वो आपको बेसिकली तब समझ में आता है। तब बेसिकली आपको इसको, जब आपको सिर्फ ये ऑब्जेक्ट आईडीज, Not audible, sir. ओके, नाउ ऑल्सो नॉट ऑडिबल, नाउ ऑल्सो नॉट ऑडिबल, yes, now also not audible. Yeah, tell me whether I'm audible or not. Audible, sir. Now audible, ठीक है. So whenever you go for the debugging, whenever you go for the debugging, that time you receive this record IDs. तब आपको अगर ऑब्जेक्ट आईडीज पता है ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये जो एरर आ रहा है वो कौन से ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है। इसीलिए ट्राई टू लर्न फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट आईडीज। सारी याद नहीं करनी है और ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बट एटलीस्ट आपके डे टू डे में जितने आपको ऑब्जेक्ट्स लग रहे हैं, सो ट्राई टू लर्न देयर ऑब्जेक्ट आईडीज। और कितने डिजिट का आईडी, 3 डिजिट का तो आईडी है यार, कोई बड़ा डर नहीं है। सो दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू टू लर्न दी ऑब्जेक्ट आईडीज, ठीक है। वैसे ये जनरली कोई बताता नहीं है, लेकिन फिर मुझे पता है इसका फायदा क्या हो सकता है। तो दीज वर द फ्यू एडवांटेजेस जो रिलेटेड टू दिस है। चलिए, सो टुडे आई एम गोइंग टू एंड इट राइट नाउ, आई एम गोइंग टू एंड दिस ईयर। और मंडे से हम इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्रिएशन पे जाने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग और उसके बाद आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं।